dear student, class 11th, subject chemistry, content name equilibrium. Equilibrium is a unique state of physical and chemical state, all living and non-living tending to achieve equilibrium state. Ultimate aim of living or non-living is achieve equilibrium. Equilibrium play an important role in numerous biological and environmental processes. Suppose then equilibrium involve oxygen molecules and hemoglobin play an important role in the transportation and delivery of oxygen in our lungs and our muscles. The two half reactions are exist in opposite direction in the constant reaction rate that is known as the equilibrium state. Equilibrium may be established both physical and chemical process. When reaction take place in closed container, a constant temperature, the concentration of reactant and concentration of product should be equal at a at a fixed reaction rate. The conversion of reactant into the product, that of product into the reactant become equal, that is known as the equilibrium. Means no change the concentration of component of the reaction mixture occur in this state. The mixture of reactant and product at equilibrium state is called equilibrium mixture. All the chemical reactions taking place in a closed system finally attain equilibrium state. If reactions are reversible, physical and chemical change both are performed in the opposite direction at the constant temperature and the closed vessels. Equilibrium in physical state, when solid change into the liquid means it solid perform the liquefaction and liquid perform the condensation. Liquid into gas, solid into gas means liquid and solid equilibrium, melting of ice. Liquid gas equilibrium, evaporation of liquid and gas equilibrium means evaporation of water that is performed in the closed container. So equilibrium it is established between evaporation and condensation of both stated. Solid gas equilibrium, some substance on heating directly convert into the vapor, that is known as the sublimation. Means solid convert gas without having the state of liquid, it is known as the sublimation. Means solid gas equilibrium established at the constant temperature in a closed container of the sublimation. Equilibrium of miscibility of solid in the liquid and gas in the liquid means that different stages react together and form a equilibrium. Equilibrium related with miscibility of gas and liquid. Like solid substance, gas are also soluble in water and other solvent. In the saturated stage, an equilibrium is established between the solution and gaseous phase. Solubility of a gas in the liquid mainly depend upon the pressure and temperature. A gas is more soluble at low temperature and high pressure. Means their solubility is increased at the low temperature and high pressure, and solubility decrease at the increase the temperature. A stable compound has not been formed by the reaction of gas with HCl, then water may be easily removed from the solution on heating. Presence means solubility of a gas in the given solvent is directly proportional to the pressure of this content constant temperature. It is known as the Henry law, and this pressure is known as the partial pressure. Characteristics of physical equilibrium. Equilibrium is possible only in a closed system at constant temperature. Means हम physical equilibrium तभी establish कर सकते हैं जब particular reaction एक closed system पर perform कराई जाए और उसका temperature constant हो. Solid liquid equilibrium can be established only at a temperature that is either the melting point of a solid and freezing point of a liquid is same. In equilibrium, in equilibrium of liquid and gas, vapor pressure of liquid is constant at constant temperature. All physical equilibrium or all physical equilibria are dynamic. Dynamic means at equilibrium two opposite reaction proceed at the same rate, means rate of the reaction is same at the unit time in unit reaction. After an equilibrium is attained, concentration of different substances may be determined with the help of an expression. Magnitude of constant
represent the extent to which a given reversible reaction goes before equilibrium is attained by it. Solubility of a solid in a liquid is constant at a given temperature. Example, concentration of sugar in solution at equilibrium remains constant at a given temperature. The process of dissolution of a gas in a liquid, concentration of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure that is applied on the gas at the constant temperature or definite temperature. That rule is known as the Henry law, and that pressure which are applied at constant temperature, that partial pressure is known as the partial pressure. All measurable properties of a system are constant. मीन्स फिजिकल इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश कराया जा सकता है जब पर्टिकुलर रिएक्शन क्लोज कंटेनर पर परफॉर्म कराई जा रही हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसके बाद हमें यह देखना है कि पर्टिकुलर कौन सी स्टेट किस स्टेट में चेंज हो रही है। सपोज देन गैस लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो दोनों का वेपर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। सपोज देन सॉलिड गैस और गैस सॉलिड में चेंज हो रही है तो सब्लिमेशन कांस्टेंट निर्धारित होना चाहिए। और यदि सपोज देन गैस को आप लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उस समय पर आपका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर जो लगाया जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो उसको डिटरमाइन करेगा, किसको, इक्विलिब्रियम स्टेट को। Second, chemical equilibrium. An equilibrium established during the chemical change or process that is called chemical equilibrium. Reaction are two types. First, irreversible reaction. Second is reversible reaction. When any reactant converted to the product under any condition does not convert back into the same reactant, that is known as the irreversible reaction. Suppose then you take the potassium chlorate, that compound is heated, then it dissociates into potassium chlorate and oxygen. Under normal prevailing condition, potassium chloride and oxygen cannot be converted back into the potassium chlorate. It is thus clear that this reaction take place in one direction only and get completed. Whole mass of KClO3 is transformed into KCl and O2. Such reaction which can proceed in only one direction, so it is known as the irreversible reaction. Reversible reaction, if the product of a certain reactant or certain reaction can give back the reactant under the same different conditions, the reaction is said to be reversible reactions. These reactions proceed in both directions. What are the characteristics of chemical equilibrium? Rate of forward and backward reaction are same, means rate of forward reaction in unit time is 1 as about or equal to the rate of backward reaction. Concentration of reactant and product in mixture during the state of equilibrium are constant. A change in the state of equilibrium take place by the change in the macroscopic property of the system. What are the macroscopic property? Pressure, temperature, concentration of reactant and product. At the equilibrium, concentration of product and reactant are changed in unit time with same amount at opposite direction. A change in the state of equilibrium takes place by the change of microscopic property. Chemical equilibrium is dynamic in nature. When reversible reaction is in equilibrium, the reaction seem to be stand still. क्यों stand still दिखाई देती है? क्योंकि reactant और product के concentration में कोई भी decrease या increasement हमें दिखाई नहीं देता है, जबकि same amount में opposite direction पर ये concentration decrease या increase हो रहा होता है। Chemical equilibrium can be established from any direction. Reaction may be stated from product or reactant, means equilibrium किसी भी direction से establish हो सकता है reactant से product की ओर हो या product से reactant की ओर हो। Equilibrium remains unaffected on adding a catalyst, means याद रखिएगा catalyst equilibrium establish करने में कोई role follow नहीं करता है। Equilibrium can be established only one closed container, और केमिकल इक्विलिब्रियम केवल क्लोज कंटेनर पर इस्टेब्लिश कराया जा सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज कंडक्टेड इन अ क्लोज्ड वेसल्स, देन फर्स्ट हम क्या देखते हैं, जब कोई रिएक्शन हम क्लोज कंटेनर पर परफॉर्म कराते हैं तो जब इस रिएक्शन स्टार्ट होती है तब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टाइम आगे की ओर बढ़ता जाता है, rate of forward reaction and rate of backward reaction and their velocity is same at constant temperature. After that, suppose then we are going to establish the relationship between concentration and time. जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो
रिएक्टेंट जो होता है इनका कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जबकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेम टू ईच अदर, और उसी समय इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। दैट स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक नेचर है क्यों? ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, यदि हम ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सभी कांस्टेंट होती हैं कब? जब इक्विलिब्रियम स्टेट पाई जाती है। इट देयरफॉर अपीयर एज इफ रिएक्शन इज स्टॉप्ड, और हमें ऐसा महसूस होता है कि ये सभी कांस्टेंट होने पर हमें रिएक्शंस कांस्टेंट दिखाई देती है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट पर हो रहे होते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बोथ साइड इज सेम, और हमें उस समय पर कंसंट्रेशन पर कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉस एक्शन ऑफ मास सेक्शन। एक्टिव मास, एक्टिव मास और मोलर मास। एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर मास, मोलर मास मीन्स होता है ग्राम पर लीटर, मीन्स इट इज active mass or molar concentration of substance means its number of moles, gram, molecules per unit volume or per liter, that is known as the active mass. It is represented by enclosing the symbol or formula of the substance in the square bracket. Now two नॉर्वियन केमिस्ट गुलबर्ग और पीटर वागे, मिस गुलगर और वागे ने स्टडी करी, क्या स्टडी करी? कंसंट्रेशन effect of concentration of reactant on the rate of a reversible reaction, and it 1867 a law was proposed by them regarding chemical equilibrium, which was called law of Mohs action, which has stated that गुलबर और बागे के द्वारा मॉस एक्शन या एक्टिव मॉस हाइपोथेसिस परफॉर्म किया गया। उनके अकॉर्ड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्ट सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मॉस, and the rate of chemical reaction if more than one reactant are present is directly proportional to its product of active mass of reactant। means किसी भी रिएक्शन का रेट इस सब्सटेंस के कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके एक्टिव मास के। यदि रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब प्रोडक्ट जो हमें फॉर्म में मिलता है वो उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। After that, law of Mohs action can be applied on equilibrium of reversible chemical reaction. Suppose then A and B are the reactant. B take the N1 part of A and B take the N2 part of B. B perform the reversible reaction, and amount of N1 and N2 convert into C and D, M1 or M2. Means rate of combination of A and B, A to power N1 and A to B to power N2. Rate of forward reaction RAF means rate of forward reaction is A to power N1 into B to power N2. Rate of backward reaction C to power M1 into D to power M2. means we can say that the constant forward reaction constant and the constant backward reaction constant, hence their ratio is Kc should be also at constant, means यदि concentration constant है, this is called equilibrium constant. Equilibrium equation or law of Mohs action, equilibrium constant Kc may also be represented by K because it is the ratio of two rate constant. Two rate constant means rate of forward reaction and rate of backward reaction. We are going to study the factor affecting the equilibrium constant, change in temperature. When the value of Kc means constant in concentration is definite, जब Kc की वैल्यू डिफिनिट हो तो गिवन टेम्परेचर में भी जो भी चेंज होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्ड ही चेंज होगा। मीन्स रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर क्लियरली अफेक्ट करता है किसकी वैल्यू को? Kc की वैल्यू को। यदि हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं तो जो वैल्यू Kc होगी वो इंक्रीज होगी लगातार, जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। लेकिन यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो Kc लगातार डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते चले जाएंगे। मीन्स कह सकते हैं कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यदि रिएक्शन रिवर्सिबल एक्शन होती है तो। और वो वन टॉप इक्वेशन के द्वारा हम इस
को डिटरमाइन भी कर सकते हैं, मीन्स ये वैल्यू हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं Kp by Kc की। Next is the change in the unit. If the unit of concentration of reactant and product are changed, there is a change in the magnitude of constant value of Kp and Kc are different. Factor affecting equilibrium and Lee-Chartier principle. Important principle for Lee-Chartier principle. In any reactions, the state of equilibrium is disturbed by the change of temperature, pressure, concentration of reactant or product. मीन्स हम ये देखते हैं कि यदि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हुआ या इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम क्यों आएगी, टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन के चेंज के कारण आएगी। टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चाहे आप रिएक्टेंट का चेंज करें या प्रोडक्ट का चेंज करें, ऑलरेडी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी बे दैट इक्विलिब्रियम अटेंड अगेन, और उसे डायरेक्शन पर प्रोसीड होगी जहाँ से वो दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेंड कर सके। If a chemical system at equilibrium is subjected to change a factor affecting, suppose then कोई equilibrium established है और एक या दो फैक्टर यदि चेंज हो जाते हैं, सपोज देन टेम्परेचर, सपोज देन प्रेशर, या सपोज देन कंसंट्रेशन चेंज हुआ, किसका, चाहे रिएक्टेंट का चेंज हो और चाहे प्रोडक्ट का चेंज हो। चेंज होने पर होगा क्या, वो सिस्टम अपने आप ही क्या करेगा, प्रोसीड कर जाएगा, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, so as to undo or reduce the effect caused by the change, ताकि उस चेंज को डिनाई किया जा सके और फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या किया सके, ऑब्टेन की जा सके। Suppose then this law is applicable to both physical and chemical equilibrium. Effect of change in concentration of equilibrium. Suppose then हम concentration change कर रहे हैं, suppose then equilibrium state come amount A or B added to it. According to Lee-Chartier principle, the effect of adding then will be such a way that the concentration of A and B that are reactant, they are reduced. It is possible when more amount A and B react to form the product. Means suppose then we take H2 and I2 and form the hydrogen iodide. H2 gas is again added to the reactant basis and equilibrium should be attained. Effect of change in the pressure on equilibrium. There is effect of change in the pressure only on the gaseous reactions in which there is change in number of moles in the chemical equation, moles of product. Suppose then in the example of ammonia, dinitrogen pentaoxide, dinitrogen tetraoxide, effect of change of volume. आप पहले जानते हैं प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीन्स प्रेशर इज inversely proportional to 1 by V. If the volume of gaseous reaction is decreased, then the pressure exerted by its molecular increase. Therefore, the effect decrease in volume will be similar to effect of increase in the pressure, since an increasing the pressure equilibrium shifted on the direction in which number of moles get reduced. Therefore, on decreasing the volume, the equilibrium will shift in the direction which number of moles is reduced. Effect of change in temperature. यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रिएक्शन में जो हीट होती है वो रिलीज होती है कब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और यदि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, सच रिएक्शन आर एज कम्बिनेशन आर टू रिवर्स रिएक्शंस. इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक. द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मतलब N2 and H2 react together and form NH3. If NH3 is dissociated, then N2 and H2 are formed, means exothermic reactions in backward change into the endothermic reaction. That is the Lee-Chartier principle. After that, the Lee-Chartier principle. Application of Lee-Chartier principle on equilibrium involving physical change of temperature on the solubility of solid. Effect of pressure on the melting point of solid, effect of temperature and pressure on the evaporation of water, effect of pressure on the boiling point of liquid, application of Lee-Chartier principle on equilibrium involving chemical change. Formation of ammonia by Haber process, means N2 and H2 form the ammonia. It is the exothermic process. Sometimes ammonia is decomposed, it is an endothermic process. What is the effect of pressure and temperature in the formation of Haber process of ammonia? ये क्लियर है इस इक्वेशन से कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में हम कंबाइन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, अमोनिया मिलती है, और हमें 200 atm प्रेशर यहाँ पर रिलीज करना होता है. लेकिन यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर अपने आप ही इंक्रीज होता है.
या हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन इन इंक्रीज टेम्परेचर, product would be formed in the larger quantity, but product cannot reversible and cannot form the reactant. Effect of removing product, manufacture of sulfur, synthesis of nitric oxide, and other different examples of Lee-Chartier principle. After that, we are going to study the concept of acid and base. Acid and base, first Arrhenius concept.